Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing 10 important questions along with the revision of your last chapter of physics, that is sound. So sound जो है आपका grade 10 का last chapter है, right? So आज हम discuss करने वाले हम revision करेंगे पहले थोड़ा सा और then we are going to discuss the 10 important questions. So हमने motion, force laws of motion, gravitation, after that work, power, energy और अब sound कर रहे हैं. So with that we have completed with all our chapters plus mock paper B I have already given. Okay, so let us start with sound. Before that, what you have to do, make sure to like this video, share with your friends and subscribe to the channel right away. So now let us start with doing a quick revision. Okay, we have studied that sound is a wave. Okay, it travels in the form of waves and it requires a medium. Correct? Sound को एक medium चाहिए रहता है. So when we plot a graph, हम एक ऐसा कुछ graph बनाते हैं. Correct? We plot such a graph. Correct? In this graph, we have certain terminologies. This part is known as the trough. Correct. This part is known as the crest. After that, this to this ये पूरा distance को हम बोलते हैं amplitude. करेक्ट, एम्पलीट्यूड. और एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक या एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, डिनोटेड बाय lambda. Correct, right? That is the wavelength. So when I talk about wavelength का unit होता है hertz, right? Secondly, when we talk about waves, वो जब travel करते हैं, sound waves travel in the form of compressions and rarefactions. Correct? So when I talk about compression, so compression तब होता है when there is high pressure region. Okay, high pressure region is known as compression. और rarefaction कब होता है? Rarefaction is when we have low pressure region where the pressure is low. If you want detailed explanation कि कैसा क्या होता है, तो you can even check out the video, one shot video already बनाएगी, you can check the link in the I section. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ एप्लीकेशन में. फर्स्ट टॉकिंग अबाउट एको. एको क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अगर एक सरफेस अगर साउंड इधर से इंसिडेंट होता है, सो वो सेम एंगल्स पे रिफ्लेक्ट करता है बाय द सेम रूल्स ऑफ लाइट. जैसे लाइट के रूल्स होते हैं, सेम वे से वी हैव द रूल्स ऑफ साउंड ऑल्सो. ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होते हैं. सो एको और रेवर्बरेशन दो चीजें होती है. ओके, रेवर्बरेशन मतलब अनप्लेजेंट रिफ्लेक्शन. एको कैसा हो गया? जैसे इफ आई से लेट्स से हेलो, सो इट विल बी हेलो 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 लाइक दिस. रेवर्बरेशन कहते हैं हेलो लो लो लो, ऐसे ऐसे होता है वो. ठीक है, सो दैट इज अनप्लेजेंट. ओके, दैट्स एको. नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट अल्ट्रासाउंड. ठीक है, दो टाइप्स के साउंड होते हैं, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक. व्हेन आई टॉक अबाउट इंफ्रासोनिक एज इन लेस. ठीक है, तो इंफ्रासोनिक आर द साउंड्स व्हिच आर लेस देन 20 hertz. एंड ultrasonic or ultrasound are the sounds which are more than 20 kilohertz. 20 किलो मतलब 20,000 hertz. ठीक है, तो we use ultrasonic in many fields, like in science we use for ultrasonography, then we use for breaking the kidney stones in सब में. ठीक है, so with this हमने ये चैप्टर का थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया टू रिफ्रेश द कंसेप्ट. ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर. ठीक है, question number 1. Calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 220 Hz and speed is 440 meter per second in a medium. ठीक है, तो हमको दिया गया we have to find the value of the wavelength. ठीक है, what is given to us? It is given that frequency is how much? 220 Hz. करेक्ट. उसके बाद वेलोसिटी कितनी है? अभी देखो ये दोनों v नहीं है, दिस इज एक्चुअली न्यू. ओके, दिस इज न्यू एंड दिस हमारा इंग्लिश का v है. ठीक है, दिस इज एक्चुअली न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी. और वेलोसिटी कितनी है? 440 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्बडा. ठीक है, अब देखो वी नो दैट velocity will be equals to nu multiplied by lambda. Correct, so what will be lambda then? Lambda will be nothing but v divided by
new, correct? That means 440 divided by 220. 0 gaya. 11s are how much it will be? No, sorry, not 220, it's 2 220. Okay, okay, sorry, it is 220. All right, it is 220. So ये हो गया हमारा 220 हुआ. If we take two ones, ठीक है, 20 ones are 22, so 2 meter per second is the, sorry, not meter per second, or 2 meters is the value of lambda. Okay, 2 meters is the value of lambda. Okay, let's move to the next question. Next question कहता है, a person is listening to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 440 meter from the source. What is the time interval between successive compressions? जो सोर्स है, जो कंप्रेशन आ रहा है, उसका टाइम इंटरवल कितना होगा? अब देखो, दो कंप्रेशंस, ठीक है, या दो रेयर फ्रैक्शंस का जो टाइम पीरियड रहेगा वो इक्वल रहेगा. लाइक इफ यू लुक एट आवर ग्राफ, हमको पता है ऐसा ऐसा ग्राफ है. सो दिस एंड दिस, ये दो क्रेस्ट, दो कंप्रेशन या दो रेयर फ्रैक्शंस का डिस्टेंस इक्वल ही रहता है. ओके, सो दैट मीन्स टाइम इंटरवल विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड, है ना? द टाइम क्या होता है? टाइम इज नथिंग बट 1 बाय फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? दैट मीन्स 1 बाय 500 हर्ट्ज दिया गया है, दैट इज नथिंग बट 0.002 सेकेंड्स. ठीक है, ओके, 0.022 सेकेंड. अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, और यू कैन इवन राइट इट एज 2 मिली सेकेंड्स. ठीक है, दैट इज द आंसर. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एको रिटर्न इन 3 seconds. ठीक है, एक एको था, वो 3 सेकंड में वापस आया. वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग साउंड फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट साउंड की स्पीड इज 342 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको. स्पीड दी गई है, v की वैल्यू है 342 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? उसका टाइम टेकन इज 3 सेकंड. हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल. सो डिस्टेंस d will be equals to what? V into t. That is nothing but 342 multiplied by 3. 3 2s are 6, 4 3s are 12, right? So 1026 meter is the distance. But will it be the answer? No. 1026 है distance पूरी journey का. Let us say कि this was the source, ये source है, ये surface है, इधर से गया और इधर से reflect हुआ, ये total 1026 है. पर बस हमको एक distance find out करना है ना reflecting surface तक का. So it will be 1026 divided by 2. That becomes 513 meter. That is your answer. Okay. Let's move ahead. And okay, ठीक है, ये तो हो गया. Okay, question number 5. Flash and thunder are produced simultaneously, but thunder is heard a few seconds after the flash is seen. Why? अब देखो क्या होता है कि थंडर जो होता है ना, इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया तो क्या होता है, द फ्लैश एंड थंडर, जब थंडर स्टॉर्म होता है ना, तो फ्लैश हो गई आपकी लाइट, करेक्ट? फ्लैश इज लाइट, हाँ. और थंडर, थंडर जो होता है वो साउंड होता है. अब देखो वी आर टॉकिंग अबाउट एयर की बात कर रहे हैं हम, करेक्ट? एटमॉस्फेयर में स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेर एज साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड. सो यू कैन अंडरस्टैंड स्पीड की ज्यादा है, लाइट की ज्यादा है, तो लाइट पहले आएगी, उसके बाद साउंड ट्रैवल करेगा. ओके, let's move ahead towards question number 6. A person has a hearing age range from 20 hertz to 20 kilohertz. What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है कि हियरिंग एज दी हुई है, हियरिंग रेंज, यू हैव टू फाइंड आउट कि वेवलेंथ कितना होगा. ओके, अब देखो वी नो दैट रिलेशन क्या है, वी नो दैट लैम्बडा इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय न्यू, करेक्ट? हमको ये पता है v इज वेलोसिटी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब देखो व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स. टिपिकल वेवलेंथ्स में मतलब हमारे पास दो वेवलेंथ्स है ना, 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज है. तो टॉकिंग अबाउट 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज की जब हम बात करें तो जो स्पीड रहेगा वो कितना होगा? स्पीड विल बी 344 मीटर पर सेकेंड.
correct? You applying the same formula, lambda is equals to velocity by frequency. हमको क्या मिलता है, lambda is already given, ठीक है? सॉरी, corresponding of ये ओके, नॉट लैम्बडा, सॉरी, frequency is given to us, that is 20 hertz, correct? और velocity 344 है. So what will be the answer? It will be nothing but 344 divided by 20. That gives me 17.2 meters. This is the first wavelength का distance, lambda. अब दूसरा केस देखो, डू हैव एक्स्ट्रा स्लाइड हियर? ओके, अब देखो दूसरा केस देखो क्या होगा, व्हेन आई हैव 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है? 20 किलो हर्ट्ज इज हाउ मच? 20 किलो हर्ट्ज इज नथिंग बट 2 into 10 raised to 3 hertz. Okay, 2 raised 20, sorry, not 2, 20, 20 into 10 raised to 3 hertz, ठीक है? So wavelength अब कितना होगा? Lambda is equals to velocity by nu, isn't it? So velocity तो सेम रहेगी, 340, और डिवाइड बाय nu की वैल्यू है 20 into 10 raised to 3, करेक्ट? कैलकुलेटेड फर्दर, इधर कोई पावर नहीं है, करेक्ट? सो वी कैन राइट इट एज इट इनटू 10 रेज टू 0. सो द आंसर विल बी 1.72 into 10 raised to minus 2 meter, because this is kilohertz. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. टू चिल्ड्रेन आर एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है? लेट्स से दैट दिस इज माय एल्यूमिनियम रॉड. एक बच्चा इधर खड़ा है, एक बच्चा इधर खड़ा है. वन स्ट्राइक द एंड ऑफ द रॉड विद अ स्टोन, इसने एक इधर स्टोन मारा इधर. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द सेकंड द साउंड वेव इन एयर एंड एल्यूमिनियम टू रीच दिस सेकंड. अब देखो, एल्यूमिनियम सॉलिड है, पर मारा तो एयर से भी तो जाएगा. सो एयर और एल्यूमिनियम का, सॉलिड का क्या रिलेशन होगा रेशियोज का, दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, लेट अस से कि रॉड की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, ठीक है? ये याद करते हैं. सो टाइम टेकन T1, लेट अस से T1 है, हम फाइंड आउट कर रहे हैं रॉड के थ्रू, ठीक है? कितना होगा? टाइम 1 विल बी नथिंग बट डिस्टेंस बाय स्पीड, distance by speed, correct? So let us say it will be 1 divided by speed होगी जो होगी एलुमिन में, let's say it is VAL, ठीक है? VAL. Similarly दूसरा, let's say air में, let us talk about air, T2. Let's talk about air over here. Air में क्या होगा? T2 will be equals to distance, distance कितना है? 1 लेंगे हम, okay, divided by a speed, speed is V, और एयर में जितनी स्पीड है, करेक्ट? इफ आई टेक द रेशियो, ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा? ओह सॉरी, नो, नो एक्स्ट्रा स्लाइड. ओके, रेशियो क्या होगा? T1 is to T2, that will be nothing but 1 by VL by 1 by V air. So क्या होगा? VAL divided by VAIR, correct? Air. So उन दोनों का ratio is this. Okay. Now let's move ahead towards the next question. Frequency of a source of sound is 100 hertz. 100 hertz की frequency है. How many times it will vibrate in a minute? 1 minute में कितना होगा? अब देखो, frequency is given, nu is given to you as 100 hertz. Okay. Now number of oscillations, definition के हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितनी होगी पर सेकंड के हिसाब से? 1 सेकंड में हुई है 100, करेक्ट? 100 ऑस्किलेशन हुए हैं. सो 1 मिनट में फाइंड आउट करना है. 1 मिनट इज नथिंग बट हाउ मेनी सेकंड्स? 60 सेकंड्स, करेक्ट? नाउ हमको फाइंड आउट करना है 1 मिनट में. सो व्हाट कैन वी डू? 100 into 60, unitary method, that gives you 6000. So मतलब 6000 times ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा 1 मिनट में. ओके, next one. A stone is dropped. देखो, this is an important question. A stone is dropped from the height of a tower 500-meter high into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard? टॉप पे जाके स्प्लैश कब होगी? और आपको दिया गया है कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 और साउंड इज 340, ठीक है? अब देखो,
टाइम आफ्टर द स्प्लैश इज हर्ड, कितना टाइम होगा वो, जब हम स्टोन का, जब जितना टाइम वो स्टोन पहुंचा और जितना टाइम स्प्लैश होगा, आफ्टर दैट ओनली स्प्लैश कैन बी हर्ड, राइट? सो लेट अस से द फर्स्ट पार्ट, दैट इज टाइम टेकन. अब इनिशियल वेलोसिटी यू विल बी इक्वल्स टू जीरो ओनली, क्योंकि वो ड्रॉप किया हमने, सो कोई वेलोसिटी नहीं है. अब हम यूज करते हैं इक्वेशन. वी नो दैट एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हम करेंगे एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इधर हाइट है और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है. ओके, सो हाइट इज गिवन एज 500 इज इक्वल्स टू 0 इंटू टाइम इंटू 1/2 इंटू जी की वैल्यू इज 10 इंटू टाइम का स्क्वायर. Correct? Further, if you simplify, you will get it as this becomes 1 जा, this becomes 5 जा. 5 into t, that means 500 is equals to 5t square. Correct? And t square is nothing but 500 by 5, that is 100. And t is equals to root of 100. Therefore, it is 10 seconds. ठीक है, 10 seconds है. This is the answer? No, that is not the answer. Why? I'll tell you. अब देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या सॉल्व करना है कि टू रीच द टॉप, नीचे गया, अब इस ऊपर भी तो आना है उसको. करेक्ट? सो पहले जो हमने ढूंढा, दैट वाज ए टाइम टेकन बाय द स्टोन. स्टोन को पहुंचने में कितना टाइम, अब आवर्स को पहुंचने में कितना टाइम. लेट अस से दिस इज टाइम 2. इट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितनी है? 500. स्पीड ऑफ साउंड 340. 0 कैंसल. You will simplify and you'll get 1.47 seconds. अब देखो, 10 plus 1.47 will give you 11.47, sorry, 47 seconds. That is the total time after sound splash of the sound will be heard. Okay, अब जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड. इफ द वेव लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड विल इट बी ऑडिबल. अब देखो, स्पीड इज गिवन, v is equals to 339, correct, meter per second. Lambda is given 1.5 centimeter. If I convert it to meter, it will be 1.5 into 10 raised to minus 2 meter. That will be easy for calculations. Or you can, if you can, you don't know to write this, you can add other way also. So frequency will be what? Nu will be equals to velocity divided by lambda. That means 339 divided by 1.5 into 10 raised to minus 2, isn't it? That will give somewhere around 22,600 hertz. Ab, listen, we know that our range is still, hearing ki range is only from 20 hertz to 20,000 hertz की ही हम सुन सकते हैं, राइट? दिस इज मोर, सो इट विल नॉट बी ऑडिबल. ये ऑडिबल नहीं रहेगा बिकॉज इट इज अल्ट्रासोनिक. ओके, so with this, students, we have completed with doing some very important questions of your chapter sound and completed your grade 9 topics of physics and biology and even chemistry. So science हमारा पूरा complete हो गया. Thank you so much for watching, and I'll be seeing you in the next videos. Make sure to comment if you want some other videos or some specific videos related to exams. So I'll be seeing you in the next video, and make sure to like this video, share it with friends, and subscribe to this channel. Till then, we meet next time. Take care and goodbye.